अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डिफरेंट पर्सपेक्टिव बाय ज़ुबैर ख़ान प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और इसमें शुरू में ये बताना चाहता हूँ कि हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने दरख्वास्त की है कि आप जो बातचीत करें अगर उसका मुख्तसरन ख़ुलासा इंग्लिश में भी बता दिया करें, क्योंकि कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको उर्दू समझ नहीं आती। तो मैं पहले जो आज बातचीत करनी है उसका मुख्तसरन ख़ुलासा इंग्लिश में बता देता हूँ, फिर बातचीत उर्दू में करते हैं। डियर व्यूअर्स, you are welcome in program A Different Perspective by Zubair Khan. As you all know that from last almost 2 months, the European continent is facing a conflict between Russia and Ukraine. Apparently it is a conflict between Russia and Ukraine, but if you actually see it, then we can say that it is a conflict between Russia and America, with some of its allies from the Europe continent, though they call it NATO alliance, but not all of them are a party to it. This Sunday, the Secretary of State and Secretary of Defense from USA, they visited Ukraine and met with the President of the Ukraine. And they went back, and on Monday, the Secretary of Defense has made a very, very big announcement. And the summary or the nutshell from this announcement is that they have changed their now strategy and the missions or the goals of this conflict. And now the Secretary of Defense from USA has openly said that the strategy by USA and its allies in Europe, though they call it allies, but I don't know which allies they mean, is that they have to now defeat the Russia at all cost, and Ukraine must win. Reason is that they say that they want to inflict lot of damage and casualties to Russian army, to its economy, so that it should never dare to have any problem or any invasion, you can say, or any conflict or any dominant issue with its neighbors. And with this aim, they have provided the Ukraine with very sophisticated and modern weapons, including the Howitzer 72 and the Ghost, kamikaze drones. They are tactically very, very advanced drones, and before that they never thought of providing these things to the Ukrainian army, but now they have provided them. And the ultimate aim is that they have to defeat the Russians at all cost. And another word what has been said by the Secretary of Defense, that by giving these sophisticated and modern equipment to Ukraine, they think that for next decade Russia will never dare to attack or to have any conflict with the Ukraine. So these are the aims in nutshell which have been said by the US Secretary of Defense, and he is always taking the name that its allies in the NATO or in the European Union, they all are on board, and now they are going to have this aspect in mind, and they are going to give a very tough time to Russians, those who are concentrated in the Donbas region, and the ultimate aim is that they will inflict them very, very heavy casualties and damages. The argument what they have taken is, though it is still doubtful in the international media, but they say that whatever cruelties and atrocities to humanity has been committed by the Russian army in the Ukraine city of Bucha, because of that now they are adamant and they are determined to defeat the Russians. Now, when this statement appeared today in the newspapers and in the media, the foreign minister of Russia, Mr. Lavrov, he responded very quickly, and he made a very, very clear statement. He said that the targeting of the weapons, what
whatever has been provided to the Ukrainian army and whatever weapons with which they are fighting in the eastern part of Ukraine with Russian army. So he said that we made it very clear that we are going to target these weapons and we are going to destroy these weapons. So it will continue. And he said, now with the latest comments by the Secretary of Defense by the USA, he said now it is very clear that who is fighting in Ukraine, and he made it very clear and addressed to the whole world that listen, now the danger of atomic warfare is imminent and it is very considerable. So he repeated it twice and said, please listen the world, please listen the Europe. Because of these activities of America and its some allies in Europe, the atomic warfare or atomic war danger is now imminent on the continent of the Europe as well as other places. So with this another now alarm has risen, since it is just today, and I don't know how the various governments will react to it, because if we see deeply, then we those who live in Germany should take care of these alarming situation, because as we all know that here are the bases of the US Army, and even the NATO headquarters is also in Ramstein. So nothing is out of the range of Russians either nuclear tactical bombs or the other nukes. So someone has to take all these things very seriously, and everything is not to be left to the hands of Americans. So whatever they decide, they come, they meet with their Ukrainian president, who is otherwise known as a puppet by the America. So whatever they decide over there, the three people sitting, and then they are going to impose it in whole of the continent of Europe. So other European allies and the rulers of different countries, particularly of Germany and France, they have to take care of these statements and not that endanger the whole continent and whole population to this new threat which is just on their doorsteps. तो नाज़रीन, मैंने जो बात की है वो ये है कि पिछले इतवार को जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा यूक्रेन के दौरे पे आए थे, उन्होंने सदर यूक्रेन से मुलाकात की और फिर वो वापस अमेरिका चले गए। तो सोमवार को वहाँ जाते ही जो अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा है, उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये जंग जो है वो फजूल तरीके से लंबी होती जा रही है और चुनाचे हमने अब अपने इस जंग के मकासद या गोल्स या एम्स जो हैं वो तब्दील कर लिए हैं, और अब हमारा मकसद ये है कि रूस को एक इबरतनाक शिकस्त दी जाए और उसको जितना नुकसान पहुँचाया जा सकता है पहुँचाया जाए। और दोनों फील्ड्स की उन्होंने बात की है कि माशी मैदान में भी और फ़ौजी मैदान में भी। और उन्होंने कहा है कि रूस को इस मैदान जंग में ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी जाएगी और ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि आइंदा वो कभी जुर्रत नहीं कर सकेगा कि किसी हमसाया मुल्क से किसी किस्म का वो कह दें छेड़छाड़ कर सके या पंगा ले सके। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि यही वजह है कि हम इस वक्त यूक्रेन को हम वो हथियार दे रहे हैं जो इससे पहले कभी भी हमने किसी को नहीं दिए, और जिसमें 72 हविट्ज़र ये बहुत ही मॉडर्न किस्म का तोपखाना है। और इसी तरह कुछ ऐसे ड्रोन्स हैं जो घोस्ट ड्रोन्स कहलाते हैं और 6 घंटे फ़ज़ा में रह के और अपने टारगेट को हिट करते हैं। और उन्होंने फिर इसका अदा किया है कि ये इस तरीके से हमने यूक्रेनियन आर्मी को इस वक्त लैस कर दिया है मॉडर्न इक्विपमेंट और हथियारों से कि रूस इसको याद रखेगा कि उसका मुकाबला किससे पड़ा है। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि एक और वजह भी है, हम यूक्रेन को बहुत ज़्यादा और इसी किस्म के हथियार दे रहे हैं ताकि आइंदा 10 साल तक रूसी फ़ौज और रूस की नेवी को जुर्रत ना हो सके कि वो यूक्रेन की तरफ पहली आंख से भी देख सके। तो ये उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है वापस जाते ही सोमवार के रोज़, और आज वो प्रेस में आ गया है। इस ऐलान के सुनते ही जो रूसी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पर आकर फिर ये बयान दिया है
اور انہوں نے دنیا کو متنبع کیا ہے کہ یہ آپ بیان سن لیں امریکی وزیر دفاع کا، جو یہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے تو بہت پہلے یہ اعلان کر دیا تھا کہ یوکرائن کو آپ جو بھی ہتھیار دیں گے ہم نے ان کو ٹارگٹ کرنا، اور اس وقت جو مشرقی یوکرائن میں جنگ ہو رہی ہے ڈونباس ایریا میں، اس میں ہم یہی کر رہے ہیں کہ جو یوکرائن کو باہر سے ہتھیار مل رہے ہیں ان کو ہم تباہ کر رہے ہیں اور ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ حوالہ دیا ہے کہ یہ جو امریکی وزیر دفاع نے اتنا لمبا چوڑا اور بڑا سا اعلان کر دیا ہے کہ ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے، تو روسی وزیر خارجہ نے دنیا کو متنبع کیا اور یورپینز کو کہ ہم تو آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ اگر اس طریقے کا کوئی حملہ ہوا یا اس طریقے سے کوئی ہمارے خلاف کارروائی کی گئی تو ایٹمی آپشنز ہمارے پاس موجود ہے۔ اور انہوں نے اس دفعہ پھر اس کو کہا ہے کہ اب اس کو آپ بہت سنجیدگی سے لے لیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں حکومت روس کے بہاف پہ کہ اب یہ جو ایٹمی جنگ ہے یہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ اس کو شروع کرنے پہ یہ نہ ہو کہ بعد میں صرف پچھتاوے رہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کی ان حرکتوں کی وجہ سے اس وقت جو یورپ ہے وہ تقریباً ایٹمی جنگ کے دہانے پر پہنچ گیا ہے، تو دنیا کو اس طرف اور جو یورپی ممالک ہیں ان کو اس طرف توجہ کرنی پڑے گی، ورنہ پھر بعد میں پچھتاوا ہوگا۔ ناظرین، یہ تھے آج کے پوائنٹ، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔